Good afternoon, sir. Good afternoon. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon, 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 sir. Good afternoon. Online class चल रही है। Okay, let's get started. Please switch on your videos. Arshita, Nancy, Yes, sir. हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए नैन्सी। सर हम अभी 2 मिनट बाद कर लेंगे। हाँ। मतलब कोई है सर? हाँ ठीक है ओके। Let's get started. Analyze the following observations of observation table. सर देख रहे showing- सर हमारी वीडियो ऑन नहीं है। कहिए। सर देखना सर हमारी वीडियो ऑन नहीं हो रही है। निशांत का शाह नाम। आपकी हो गई है, एक सेकंड में देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हो गई है। Okay. Analyze the following observation table, showing variations of image distance with the object distance in case of a convex lens. Okay, so the lens is a convex lens. And answer the questions that follow without doing any calculations. Okay. So just in exam, if you are not able to answer it without doing calculations, just in case, you do it in the rough. Don't show it to the examiner. Now, what is the focal length of the convex lens? So हमें convex जो formula है, lens formula use नहीं करना है, तो कैसे पता चलेगा focal length क्या है? सर थर्ड वाले पॉइंट से हम देख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द radius of curvature, and from that we can find the focal length. Okay, so the only thing is what you said is radius of curvature, right? Radius of curvature पे नहीं है, कहाँ पे है object? Your answer is correct, but the word used is not correct. Center of curvature. नहीं, center of curvature पे नहीं है, 2f पर है, right? Okay, sir. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता, कहाँ पे यूज करते हैं वो वाली टर्म्स? मिरर में। ठीक है, इसमें हम f और 2f यूज करते हैं, वहां पे r और f यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेशन थोड़ी सी अलग होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दोनों साइड कर्वेचर होता है ना इसमें, तो that is a complex thing that you will study in higher classes. अभी के लिए बस f और 2f होता है, तो 2f हमें पता चल रहा है 40 है, तो f जो है वो 20 है, right? So observation number 3 and answer is 20 centimeter. We got that straight without using the formula. Now write the serial number of the observation which is not correct. So one of these observations is clearly wrong. Obviously, we cannot check all the observations by putting them in the formulae, right? Because we are not doing calculation. On what basis have you arrived at the conclusion, right? तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत observation है इसमें?
देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, इमेज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वहां पे कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, राइट? तो दैट साउंड्स लाइक अ गुड रीडिंग, बट देयर इज समथिंग दैट हैपेंस इन अ कॉन्वेक्स लेंस. क्या होता Because है? when space हाँ, between the lens, optical center and the focal length, हाँ, then the image is formed virtual. That is on the same yes, side of the. वेरी गुड. सो अब हमें ये पता चल चुका है कि 20 सेंटीमीटर जो है वो तो फोकल लेंथ है, तो उससे कम वाले को देखते हैं, वो है 15. तो जो 15 है उसमें जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए था, राइट? और वो पॉजिटिव है, राइट? सो विच इज रॉन्ग? सो दिस इज द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. This is the wrong observation. And how do we arrive at that? The image distance is, oh sorry, the object distance is less than the focal length that we found in part A. Okay, so the image distance should have been negative. Select an appropriate scale and draw a ray diagram for the observation for serial number 2. इसके लिए हमें बनाना है. Okay, also find the approximate value of magnification. ठीक है, तो ये हम बनाएंगे. क्या स्केल यूज करना ठीक रहेगा? What would be a preferable scale? 15 centimeter. 15 centimeter is equal to देखिए हमें 60 भी बनाना है, हमें 30 भी बनाना है, हमें 90 सेंटीमीटर्स कवर करने हैं, राइट? तो हम क्या यूज करें? हमारे पास पेपर पे कितनी जगह है? मान लीजिए 20 सेंटीमीटर्स की हमारे पास जगह है टोटल. ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं कि स्केल हम ले सकते हैं, यहाँ पे स्केल हम ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट? वी विल स्केल इट डाउन बाय 5. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 12 पे आ गया, यहाँ पे -12 पे, ये 12 हो गया. ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे तो 60 ही, लिखना 60 है, लेकिन ये है 12 सेंटीमीटर पे, आप ये मार्क कर लीजिए. ओके, नाउ वी नो ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी द F is 20, सो ये हम 4 पे मार्क कर लेंगे यहाँ, और 2F जो है यहाँ मार्क कर लेंगे 8 पे, और 12 पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. Okay, now we have on 4 centimeter here and 8 centimeter, F and 2F. Now we will create a drawing. Okay, we don't have to draw the, you know, the object with the same scale. It's okay, because usually the object will be much smaller, so scale is not needed, right? So we can just draw it to an arbitrary height, and we take this and क्रिएटिव कर. we get our object. Okay, this is a, when you do using the proper scale, first thing you should check is
this is coming to be 6 centimeter. Okay, on your real scale, but you will write it as 30 centimeter. Right? You asked that as a question last time. So this is the proper using the scale. Now, when you will measure this height and this height, you will find this is smaller or bigger. We can see it is smaller here, right? And it will be roughly half of it. Okay, it will be roughly half, and in the opposite direction, so minus half will be the magnification. Okay, let's move forward. If the image formed, just a second. If the image formed by a mirror on all positions of the object placed in front of it is always diminished, erect and virtual. सबसे पहली चीज ध्यान दे दीजिए कि ये mirror है, right? Erect and virtual, state the type of the mirror, right? I think we did a very similar question yesterday also, right? So this is a convex mirror. Okay. Define the radius of curvature of the spherical mirrors. Spherical mirror का radius of curvature क्या होता है? It's the radius of the sphere of which the mirror is a part of. ठीक है? It's the radius of the sphere of which the mirror is a part of. Find the nature and the focal length of the spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 centimeter. बताइए who is this person? Who is this person who was playing the music? Peter, don't do this. And his name was also, I don't think that's a real name. Okay. So, focal length जो है वो plus 24 है. So, what type of Convex mirror. ये sorry, mirror. What 12 centimeter. And what type of a mirror is it? Convex. How Convex do you know it's mirror. convex? Because convex Because the mirrors are focal length is positive here Is focal. and radius. Yes. Okay. Very good. Mark the incident ray, the emergent ray, and the angle of deviation in the diagram. Okay, so it's a very, very simple question, 1 mark question, right? So this is the incident ray. This is the emergent ray. And where is the angle of incident marked on? Angle of deviation marked here. So we have X, Y, Z, P, Q. Out of this, which is angle of deviation? हाँ बताइए. X, Y, Z, P, Q में से कौन सा है? Z is the angle of deviation. Normally हम ये वाले एंगल को मार्क करते हैं, राइट? यहाँ पे इन्होंने इसको मार्क कर दिया जो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो सेम ही बात है. But usually we like to mark this as the angle. Okay? इसलिए ये थोड़ा कभी-कभी confusing हो सकता है question. Otherwise it's the same. There is nothing complicated. A student
very carefully traces the path of a ray through a glass slab on a for different values of angle of incidence. He then measures the corresponding values of angle of refraction and angle of emergence for every value of angle of incidence. On analyzing these measurements of angles, his conclusion would be, which is the correct answer? Please switch on your videos. Ramza, Arshita, Akshara, Devanshu. Please switch on your videos. Ramza, Akshara. Who is this person? Who is named, somebody knows who has named himself as Majnu? There's a person who named himself Majnu and is playing music in the class. Somebody knows who he is? That's quite embarrassing, right? If somebody does such things in class, that's definitely not acceptable behavior. First he named himself something, then he's naming himself something. Okay, what is the answer to this question? So the second. Second, right? So in a glass slab, angle of incidence is same as the angle of emergence, and they will be bigger than the angle of refraction. Okay, so it's a simple question. No, okay, this is a simple but a good question. Okay, let's do this. So ये x और y क्या हैं? Okay, let's come to this later, but can we quickly see what type of a thing is x? पैरेलल रेज आ रही है, उन्हें फोकस कर दिया. What is x? x कौन सा optical It is object? concave mirror or convex lens because it is converging the light rays. Very good. लेकिन किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है? तो कोई भी एक कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट? दो होते हैं कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट, कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉन्केव मिरर होता है. ठीक है, अब आप देखिए कि x भी कन्वर्ज कर रहा है, y भी कन्वर्ज कर रहा है, दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं. पैरेलल रेज आती है, कन्वर्ज होती हैं, तो कौन सा, ये रिफ्रैक्शन से कन्वर्ज कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन से कर रहा है. देखिए, तो ये मिरर है, ये लेंस है ना? तो ये जो है, ये है कॉन्वेक्स लेंस. इसमें पार हो गई लाइट, तो ये क्लियरली लेंस है ये. और किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स. इसमें रिफ्लेक्ट हुई तो ये मिरर है, और क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है यानी कॉन्केव मिरर है. ठीक है ना? तो लेंस और मिरर्स में उल्टा होता है सब कुछ. ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें से वो ऑप्शन होगा जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर बी में है और इसमें भी है, डी में भी है. अब सही कौन सा है उसमें?
इसकी फोकल लेंथ क्या है? 20 और 25 फोकल लेंथ्स है ना, क्लियरली पैरेलल राइट, जहां पे फोकस होती है वही फोकल लेंथ होती है, राइट? तो ये फोकल लेंथ 20 है, ये 25 है, यहाँ 10 दिया गया है, तो ये गलत है, यही सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, let's do this one now. A student obtained a blurred image of a distant object on a screen using a convex lens. To obtain the distinct image on the screen, he should move the lens. Okay, so वो lens किधर move करेगा? Away from the screen, towards the screen, to a position very far away from the screen, either towards or away from the screen, depending upon the position of the object. बताइए। इमेज ब्लर आ रही है, अगर इमेज ब्लर आ रही है तो क्या हो रहा है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आई, अगर मैं स्क्रीन यहां लगाऊं तो इमेज कैसी आएगी? एकदम शार्प फोकस है, यहां पे इमेज शार्प आएगी, राइट? लेकिन अगर मैं स्क्रीन को यहां लगाऊं तो देखिए एक ब्लॉब आ रहा है, पॉइंट से जो रेज आए वो एक ब्लॉब में, एक छोटे से सर्कल में आ गए, वो यहाँ पे स्पॉट बन गया, जो चीज शुरू एक पॉइंट से हुई थी। तो कैसी इमेज बनेगी? यहां ब्लर बनेगी। अब ये देखिए, अगर मैं स्क्रीन यहां लगाता तो क्या होता? तभी भी एक ऐसे ब्लॉब बनता, एक छोटा सा सर्कल बनता जो पॉइंट नहीं बनता, तो ये भी ब्लर होगी इमेज। यानी कि अगर हमारी स्क्रीन लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, इमेज ब्लर हो रही है। यानी हम केवल ये पता कर चलने से कि इमेज ब्लर है, हमें नहीं पता कि हमें लेफ्ट में मूव करनी है स्क्रीन या राइट में मूव करनी है, राइट? सो द आंसर विल बी डी, डिपेंडिंग D. D. Okay, it could be moved in either side. On the position of the object. Yes, absolutely. Okay. Next. A student focuses an image of a candle flame placed at about 2 meters from a convex lens of focal length 10 centimeter on a screen. After that, he moves gradually the flame towards the lens and each time focuses its image on the screen. ठीक है? In which direction does he move the lens to focus the flame on the screen? Neeraj sir, sorry to disturb you. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Sir, there is a student in your class without name. He's taken the entry. So please remove him, sir. Yeah. Actually,
last time also I was trying to, there is somebody who comes without name and Sir, you just know, remove them instantly if the students are not obeying your orders, that if they are not entering in the class with their name, then you can remove them instantly. So there is a student in your class, 1XMC. हाँ ये his audio is not on. Who is this? Sir, he's not a student of our school, so please remove him. So someone was also playing the song and everyone was laughing. That was not a matter of laugh. Yes, But this is not a absolutely. fair thing in your class. This is a Absolutely. serious class right now. Yeah. So there, you know, there was somebody, we couldn't figure out who he is. He was repeatedly entering the class and coming with funny names. No, I sir, removed if you him, find but he anyone, re-entered. Okay, I removed the person. He re-entered after some time, and he was using funny names and you know, playing loud music. So I had to throw him sir, out of the class a couple of times. sir, when you admit them, just see that if the exactly they have mentioned the class and their name, then please allow them. Otherwise, just keep them in the waiting room. Yeah. Okay, sir. Please continue. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, in which direction does he move the lens to focus the flame on the screen? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? Is it better now? Yes, sir. It was better and it is better. Okay, बीच में ब्रेक होने लगी थी, is it? Okay, I just readjusted my mic. Maybe it should help. Okay. हाँ, तो ये हमारा सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे हमारा लेंस है. At about 2 meters away, there is a object. And the focus is 10 centimeters, somewhere here. Okay, so it's fairly far off. So roughly somewhere, you know, here the screen was. Okay, and a sharp image was obtained. Now, what is happening is we have moved this object from here to here. How much? That's not told, but it's moved a little bit. Now, the screen is where it was. Where should we move the lens to obtain the sharp image on the screen? This is the question. How will we do this? So what will happen is, see, when we bring the object closer, the image here will go, try to go away, right? So I bring the object here, the image will move to which direction? Image will try to come here, right? We have to bring this image back on the screen, so we will have to move the lens to this side. When we move the lens to this side, there will be two things the lens will be doing. It will be reducing the object distance and increasing the image distance. And at some point, the image will again come back on this point. Okay? So, in which direction does he move the lens to focus the flame on the screen? Opposite to the screen, away from the screen. So, the answer can be away from the screen. Okay, he moves it away from the screen. What happens to the size of the image of the flame formed on the screen? Size को क्या होगा?
What will happen to the size? When we bring the object closer, what happens to the image size? Somebody should answer this. It's a bright class. At least answer this question. What will happen? बेटा हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम किया है थोड़ा, इमेज डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, तो इमेज के साइज को क्या होगा? इट विल ग्रो इन साइज, राइट? वैसे भी अगर आप फॉर्मूले से समझना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? V by U होता है ना, V बढ़ा दिया, U छोटा कर दिया तो मैग्निफिकेशन बढ़ गया, तो it will, what happens to the size? It will increase. Now the next question, right? जिसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको लॉजिक से बताना है. What difference is seen in the intensity of the image on the screen? इंटेंसिटी को क्या होता है इमेज की? अब ये चीज जो है ये फॉर्मूले में तो नहीं है लेकिन बोर्ड में पूछी जा चुकी है, तो कैसे इसकी इंटेंसिटी को क्या होगा? अब what logic can you apply to answer this question? राधिका, रुद्र, मयंक, आपके वीडियोस ऑफ है बेटा. बताइए इंटेंसिटी को क्या होगा? कुछ लॉजिक सोच सकते हैं आप? देखिए अमाउंट ऑफ लाइट तो सेम है, राइट? अमाउंट ऑफ लाइट इज द सेम. उसी इमेज को हमने बड़ा कर दिया तो वो इमेज क्या हो जाएगी? कम इंटेंस हो जाएगी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो गई. समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगी वो? इंटेंसिटी या ब्राइटनेस विल रिड्यूस. देखिए आप क्या करते हैं, आप सन की रेज लेते हैं, आ रही हैं ऐसे, और उसको ऐसे कंसंट्रेट करते हैं तो ये पेपर यहाँ पे जलने लगता है, राइट? तो ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना. जब फोकस इमेज छोटी बनेगी तो हायर इंटेंसिटी की बन रही है. ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट की एक मिनिमाइज्ड इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो वो पेपर को जला देती है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होती है. उसी तरह से जब जैसे जैसे इमेज बड़ी होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ लाइट को हमने फैला दिया है. ओके, ये इसके कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, बट लॉजिकली वी शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. What is seen on the screen when the flame is very close, at about 5 centimeter to the lens? ठीक है, करते 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 मैं यहां ले आया फ्लेम को, तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? A very large image. लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है एक स्टेज पर आकर. क्या हो जाता है? ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तो किससे कम है? 10 सेंटीमीटर से भी कम है. ठीक है ना? और जब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो क्या होता है? यानी फोकल लेंथ से कम हो जाता है डिस्टेंस, तो क्या होता है? इमेज रियल रहती ही नहीं, वो वर्चुअल हो जाती है. वो वर्चुअल हो जाती है मतलब वो किसी स्क्रीन पर आती ही नहीं है. सो व्हाट इज सीन ऑन द इमेज स्क्रीन? नथिंग. द इमेज बिकम्स वर्चुअल. ओके, एंड वर्चुअल इमेज की खासियत क्या होती है? कि वो इमेज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो सकती, राइट? So there will be nothing on the screen. This is a very, very good question which uses a lot of understanding of how
this entire concept of forming images work. ठीक है, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन still it is a very, very good logical question. Anybody has doubts on this question? Please ask me now. It's a very good question. Okay, let's do some simple numerical question now. The refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is given, find the speed of light in water. How will we do this? So from 3/2 refractive index, we can find the speed of air. Yes, speed of light in air. Okay, divided by speed of light in glass. Okay, so इससे हमें क्या आ जाएगा? Speed of light in air. In air आ जाएगी हमें, which will be 2 into 3/2 into 10 raised to power 8, which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ये आ गई अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है वाटर में, तो वाटर में it is 4/3. So which is speed of light, which is 3 into 10 raised to power 8, जो अभी हमने निकाली है, by speed of light in water. So this thing is speed of light in water is equal to 3 into 3/4 into 10 raised to the power 8, which is 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second, right? So relative refractive index पे एक basic question. We are coming to the end of the class now. Okay, so we have covered quite a few type of problems. ठीक है, थोड़े numerical problems भी हमने कर लिए. Please practice a few more numerical problems. We will do the carbon chapter in the next class. Okay, these were the 2 chapters you people wanted. So we did some revision for this. We will do a little bit of the revision for carbon chapter in the next class. Okay. Thank you. Bye-bye. Have a nice weekend and prepare well for your pre-board. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.